Aphorism 5151. Thus therapeutic law is rendered obvious to all intelligent minds by these instances, and they are amply sufficient for this end. But, on the other hand, see what advantages man has over crude nature in her happy-go-lucky operations. How many thousands more of homeopathic mobophic agents has not man at his disposal for the relief of his suffering fellow creatures in the medicinal substances universally distributed throughout creation? In them he has producers of disease of all possible varieties of action, for all the innumerable, for all conceivable and inconceivable natural diseases, to which they can render homeopathic aid mobophic agents medicinal substances, whose power, when their remedial employment is completed, being overcome by the vital force, disappears spontaneously without requiring a second course of treatment for its extirpation, like the artificial mobophic agents, which the physician can attenuate, subdivide and potentize almost to an infinite extent, and the dose of which he can diminish to such a degree that they shall remain only slightly stronger than the similar natural disease they are employed to cure, so that in this incomparable method of cure, there is no necessity for any violent attack upon the organism for the eradication of even an inveterate disease of old standing. The cure by this method takes place by only a gentle, imperceptible and yet often rapid transition from the tormenting natural disease to the desired state of permanent health. सूत्र 51 दवा की तर्कशैली। प्रकृति की चाल में जो घटनाएं घटी इससे बुद्धिमान मनुष्यों के ख्याल में चिकित्सा का नियम तो आ गया, और ये बड़ा काम इन प्राकृतिक घटनाओं ने कर दिया। प्रकृति की चाल से तो वे ही लोग लाभान्वित हो सकते हैं जिनके भाग्य अत्यंत अनुकूल हैं, लेकिन मनुष्य के पास हजारों होम्योपैथिक रोग के घटक हैं जिससे वह व्याधि से पीड़ित लोगों की सेवा कर सकता है। ये होम्योपैथिक रोग के घटक पूरे जगत में फैले हुए हैं और हर कहीं उपलब्ध हैं। ये ऐसे रोग के घटक हैं जो कृत्रिम रोग का निर्माण करने में इतने सक्षम हैं कि इनसे हर संभव काम निकाला जा सकता है। इनसे अगणित रोगों का इलाज संभव है। इनसे उन प्राकृतिक रोगों का इलाज किया जा सकता है जिनकी कल्पना की जा सकती है और जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये दवा के घटक लक्षण सादृश्यता के आधार पर अनेक रोगों को ठीक कर सकते हैं। जब ये दवा के घटक अपना कार्य पूरा करते हैं तो प्राण शक्ति उन पर काबू पा लेती है। इससे ये रोग के घटक अपने आप अदृश्य हो जाते हैं। इनका विनाश करने के लिए और कोई अलग उपचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि प्राकृतिक रोगों को हटाने के लिए पड़ती हैं जब उनसे दवा का काम लिया जाता है। कृत्रिम रोग को क्षीण किया जा सकता है, उन्हें रगड़ा जा सकता है और उनका शक्ति वर्धन किया जा सकता है। शक्ति के अनंत स्तर हासिल किए जा सकते हैं। खुराक को भी कम किया जा सकता है। उन्हें बस इतनी खुराक में दिया जा सकता है कि वे प्राकृतिक रोग जिसके इलाज के लिए दवा का प्रयोग किया जा रहा है, से बस थोड़े ही शक्तिशाली रह जाए। तो ये जो ठीक करने की अतुल्य पद्धति है उसमें किसी जीर्ण रोग को ठीक करने के लिए उग्र रूप से रोगी पर कोई आक्रमण नहीं किया जाता है। ये पद्धति बड़े ही सौम्य रूप से काम करती है। रोगी को पता भी नहीं चलता कि उसे ठीक करने की एक गहरी प्रक्रिया चल रही है। इसके बावजूद रोगी जो प्राकृतिक रोग से गहन यातना भोग रहा था उससे वह स्थायी स्वास्थ्य की दशा में रूपांतरित हो जाता है। Aphorism 52. There are but two principal methods of cure, the one based only on accurate observation of nature, on careful experimentation and pure experience, the homeopathic, before we never designedly used, and a second which does not do this, the heteropathic or allopathic. Each opposes the other, and only he who does not know either can hold the delusion that they can ever approach each other or even become united, or to make himself so ridiculous as to practice at one time homeopathically at another allopathically, according to the pleasure of the patient, a practice which may be called criminal treason against divine homeopathy. सूत्र 52 दवा की तर्कशैली। ठीक करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका निर्भर करता है सावधानीपूर्वक प्रकृति का निरीक्षण करने पर, सावधानीपूर्वक प्रयोग करने पर, और शुद्ध अनुभवजन्य ज्ञान पर। इसे हम समलक्षण चिकित्सा कहते हैं। इसके पहले विशेष रूपरेखा बनाकर इसे यह विशेष नाम नहीं दिया गया। दूसरा तरीका है भिन्न लक्षण पद्धति का। दोनों पद्धतियां एक दूसरे के एकदम विरुद्ध हैं, और जो चिकित्सक दोनों ही उपचार पद्धतियों को नहीं जानता है केवल वही इस भ्रम में रह सकता है कि इन दो विरुद्ध उपचार पद्धतियों का मेल होगा। या तो कोई चिकित्सक खुद को इतना हास्यास्पद बना सकता है कि वो कभी तो समलक्षण पद्धति से इलाज करता है और कभी भिन्न लक्षण पद्धति से इलाज करता है, जैसे भी रोगी की मर्जी होती है।
इस प्रकार की चिकित्सा समलक्षण पद्धति के खिलाफ एक आपराधिक द्रोह है। Aphorism 53. The true mild cures take place only according to the homeopathic method, which, as we have found 7-25 by experience and deduction, is unquestionably the proper one by which throughout the quickest, most certain and most permanent cures are obtained, since this healing art rests upon an eternal infallible law of nature. The pure homeopathic healing art is the only correct method, the one possible to human art, the straightest way to cure, as certain as that there is but one straight line between two given points. सूत्र 53 दवा की तर्कशैली। समलक्षण चिकित्सा के आधार पर ही सच्चा और सौम्य स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है। यह बात अनुभव से सिद्ध हो चुकी है, अनुमान से सिद्ध हो चुकी है। सूत्र 7 से 25 देखें। यही तरीका है जिससे तेजी से स्वास्थ्य लाभ होता है, निश्चित स्वास्थ्य लाभ होता है और स्थायी रूप से स्वास्थ्य लाभ होता है, क्योंकि यह चिकित्सा पद्धति प्रकृति के शाश्वत नियमों के आधार पर खड़ी है। शुद्ध समलक्षण चिकित्सा पद्धति ही सच्ची पद्धति है। यही एकमात्र मानवीय चिकित्सा है। इससे सीधा स्वास्थ्य लाभ होता है। जिस प्रकार दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, उसी प्रकार समलक्षण चिकित्सा पद्धति अत्यंत निश्चित पद्धति है। Aphorism 54. The allopathic method of treatment utilized many things against disease, but usually only improper ones, allia, and ruled for ages in different forms called systems. Every one of these, following each other from time to time and differing greatly each from the other, honored itself with the name of rational medicine 1. Every builder of such a system cherished the haughty estimation of himself that he was able to penetrate into the inner nature of life of the healthy as well as of the sick, and clearly to recognize it, and accordingly gave the prescription which noxious matter too should be banished from the sick man, and how to banish it in order to restore him to health, all this according to empty assumptions and arbitrary suppositions, without honestly questioning nature and listening without prejudice to the voice of experience. Diseases were held to be conditions that reappeared pretty much in the same manner. Most systems gave, therefore, names to their imagined disease pictures and classified them, every system differently. To medicines were ascribed actions which were supposed to cure these abnormal conditions. Hence the numerous textbooks on materia medica. Point 3. 1. As if the establishment of a science, based only on observation of nature and pure experiment and experience, idle speculation and scholastic vaporings, could have a place. 2. Up to the most recent times, what is curable in sickness was supposed to be material that had to be removed, since no one could conceive of a dynamic effect. 11. Note of morbific agencies, such as medicines exercise upon the life of the animal organism. 3. To fill the measure of self-infatuation to overflowing, here were mixed, very learnedly, constantly more, indeed, many different medicines in so-called prescriptions to be administered in frequent and large doses, and thereby the precious, easily destroyed human life was endangered in the hands of these perverted ones. Especially so with seton, venesection, emetics, purgatives, plasters, fontanelles and cauterization. सूत्र 54 दवा की तर्कशैली। भिन्न लक्षण चिकित्सा पद्धति का अवलंब करने वाले चिकित्सकों ने बहुत बातों का रोग के विरुद्ध उपयोग किया, लेकिन उन्होंने अक्सर गलत बातों का ही उपयोग किया। उन्होंने अलग अलग चिकित्सा व्यवस्थाओं का विकास किया और इन्हें भिन्न भिन्न प्रणालियों का नाम दिया। ये लोग खुद का सम्मान विचारशील चिकित्सक कहकर करते हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग चिकित्सा प्रणाली का अनुसरण करते हैं। इन प्रणालियों के प्रवर्तक खुद के बारे में बड़ा आदर भाव रखते हैं। वो कहते हैं कि हम एक रोगी के और एक स्वस्थ व्यक्ति के भीतर जो चल रहा है उसे जान लेते हैं। उन्हें पता है रोग का तत्व क्या है जिससे रोग उत्पन्न हुआ है, और उन्हें उस दवा के बारे में पता है जो रोग के इस घटक को शरीर से निकाल बाहर कर सकती है। वो कहते हैं ऐसा करने से रोगी व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति में तब्दील हो जाएगा। उनके पास उनकी खोखली धारणाएं हैं और उनकी मनमानी कल्पनाएं हैं। वे प्रकृति का न ही कोई चिंतन करते हैं, न उसे प्रामाणिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं, न ही किसी पूर्वाग्रह के बिना वे अपने अनुभवों से कोई सीख लेना चाहते हैं। वो तो ये मानते हैं कि रोग तो मात्र विशेष परिस्थितियां हैं जो घूम घूम कर उसी रूप में आती है। अधिकतर प्रणालियां इसलिए इन अनुमानित रोग के चित्रों को नाम दे देती हैं और उनका वर्गीकरण करती हैं। हाँ, हर प्रणाली अपने हिसाब से वर्गीकरण करती है। इनको लगता है कि दवा में इन असामान्य परिस्थितियों को ठीक करने की शक्ति होती है, इसलिए ये लोग मटीरिया मेडिका की ढेर सारी किताबें लिखते हैं।
एक इनको तो लगता है कि पांडित्यपूर्ण बातें करने मात्र से ही विज्ञान का अधिष्ठान हो जाता है। 2 अब तक लोग यही सोचते थे कि रोग में जो ठीक करने वाली बात है वो स्थूल है, उसे निकाल बाहर करने मात्र से रोगी स्वस्थ हो जाएगा। रोग के घटक अभौतिक स्वरूप के होते हैं, ये कोई सोच नहीं पाया था। अभौतिक तत्वों का असर व्यक्ति के प्राणों पर होता है। 3 खुद की बुद्धिमत्ता पर मोहित हुए ये लोग अनेक दवाइयों का मिश्रण बनाते हैं और इन दवाओं को बार बार और बड़ी मात्रा में रोगी को खिलाते हैं। मानवीय जीवन जो मूल्यवान है और जो आसानी से विनाश को प्राप्त हो सकता है, ऐसे लोगों के हाथों में खतरे में पड़ जाता है। ये लोग शरीर में छेद करते हैं, जुलाब का प्रयोग करते हैं और शरीर को दागते हैं। Aphorism 55. Soon, however, the public became convinced that the sufferings of the sick increased and heightened with the introduction of every one of these systems and methods of cure if followed exactly. Long ago these allopathic physicians would have been left had it not been for the palliative relief obtained at times from empirically discovered remedies whose almost instantaneous flattering action is apparent to the patient, and this to some extent served to keep up their credit. सूत्र 55 दवा की तर्कशैली। शीघ्र ही लोगों का इस बात पर विश्वास हो गया कि रोगी की पीड़ा बढ़ गई है, एक नई ऊंचाई को छू रही है, जब वैद्यकीय शास्त्र की नई प्रणालियां और तकनीकें लाई गई और यदि उन्हें वैसे ही लागू किया गया। ये लोग जो भिन्न लक्षण चिकित्सा पद्धति के अनुयायी हैं, लोगों द्वारा बहुत पहले भुला दिए जाते यदि उनकी दवा लोगों को थोड़ी बहुत राहत नहीं पहुंचाती। जब रोगी तुरंत कुछ राहत पाता है तो वो अपनी चिकित्सा जारी रखता है। Aphorism 56. By means of this palliative, antipathic, enantiopathic method, introduced according to Galen's teaching contraria contraries for 17 centuries, the physicians hitherto could hope to win confidence while they deluded with almost instantaneous amelioration. But how fundamentally unhelpful and hurtful this method of treatment is, in diseases not running a rapid course, we shall see in what follows. It is certainly the only one of the modes of treatment adopted by the allopaths that had any manifest relation to a portion of the sufferings caused by the natural disease, but what kind of relation? Of a truth, the very one, the exact contrary of the right one, that ought carefully to be avoided if we would not delude and make a mockery of the patient affected with a chronic disease. 1. A third mode of employing medicines in diseases has been attempted to be created by means of isopathy, as it is called, that is to say, a method of curing a given disease by the same contagious principle that produces it. But even granting this could be done, yet after all, seeing that the virus is given to the patient highly potentized, and consequently, in an altered condition, the cure is effected only by opposing a simillimum to a simillimum. To attempt to cure by means of the very same mobific potency, per item, contradicts all normal human understanding and hence all experience. Those who first brought isopathy to notice probably thought of the benefit which mankind received from cowpox vaccination, by which the vaccinated individual is protected against future cowpox infection and as it were cured in advance. But both cowpox and smallpox are only similar, in no way the same disease. In many respects they differ, namely in the more rapid course and mildness of cowpox, and especially in this, that is never contagious to man by more nearness. Universal vaccination put an end to all epidemics of that deadly fearful smallpox to such an extent that the present generation does no longer possess a clear conception of the former frightful smallpox plague. Moreover, in this way, undoubtedly, certain diseases peculiar to animals may give us remedies and thus happily enlarge our stock of homeopathic remedies. But to use a human mobific matter, a sorin taken from the itch in man, as a remedy for the same itch or for evils arisen therefrom is. Nothing can result from this but trouble and aggravation of the disease. सूत्र 56 दवा की तर्कशैली। गालेन ने हमें बताया कि रोगी को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए हमें रोग के स्थानिक लक्षण का विरुद्ध भाव रखने वाली पद्धति को इस्तेमाल करना चाहिए। 17 शतकों तक चिकित्सकों ने इस पद्धति को आजमाया कि उन्हें रोगी का विश्वास हासिल हो जाएगा, लेकिन उन्हें रोगी ने केवल इतना ही कहा कि उन्हें उनके इलाज से तुरंत कुछ राहत हुई है। लेकिन मूलतः ये पद्धति कोई सहायता प्रदान नहीं करती है और ये काफी नुकसान पहुंचाती है। इन बातों को हम आगे देखेंगे। भिन्न चिकित्सा पद्धति के अनुयायियों ने इस पद्धति का भी अवलंब किया है। इस पद्धति में रोगी को जो प्राकृतिक रोग से पीड़ा होती है उसके एक भाग के साथ प्रकट रूप से एक संबंध प्रस्थापित किया जाता है। ये किस प्रकार का संबंध होता है?
ये ठीक सही संबंध के विपरीत संबंध हैं। इस प्रकार का संबंध तो बड़ी कुशलता से वर्जित होना चाहिए। यदि हम जीर्ण रोग से ग्रस्त रोगी को गलत भ्रम में नहीं रखना चाहते हैं और उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं। दवा देने का एक तीसरा तरीका भी विकसित करने के प्रयत्न हुए। इसे एसोपैथी कहते हैं। जिस संसर्ग तत्व ने रोग को उत्पन्न किया उसी संसर्ग तत्व का उपयोग इस तरीके में किया जाता है। जिस विषाणु से रोग उत्पन्न हुआ है उसी विषाणु को क्रमशः घोलकर शक्तिकृत किया जाता है। इस प्रकार विषाणु का स्वरूप बदलकर उसे रोगी को दिया जाता है। इसमें रोगी को ठीक करने की कोशिश समलक्षण चिकित्सा का विरोध करते हुए की जा रही है। उसी रोग के घटक का उपयोग रोग को ठीक करने के लिए करना सामान्य मनुष्य की सोच के विपरीत है और उसका अनुभव भी वैसा ही है। छोटी माता का टीका विकसित करने वालों ने सबसे पहले एसोपैथी की तर्ज पर सोचा। छोटी माता के टीकाकरण से व्यक्ति भविष्य में कभी भी छोटी माता का शिकार नहीं होता है और इस प्रकार रोग के आक्रमण के पहले ही ठीक हो जाता है। 100% टीकाकरण ने माता के प्रकोप से लोगों को बचा लिया। अब तो इस भयंकर रोग के लक्षण तक लोगों को याद नहीं है। इसमें एक बात और हुई। हमें विशेषकर प्राणियों को होने वाले रोगों से होम्योपैथी की दवा प्राप्त हुई। लेकिन क्या हमें व्यक्ति के भीतर जो रोग का तत्व है उसे व्यक्ति के रोग की दवा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए? जैसे कि क्या हमें सोरिन का इस्तेमाल करना चाहिए? ऐसा करने से तो व्यक्ति को बड़ा कष्ट होगा और उसका रोग और विकट हो जाएगा। Aphorism 5757. In order to carry into practice this antipathic method, the ordinary physician gives, for a single troublesome symptom from among the many other symptoms of the disease which he passes by unheeded, a medicine concerning which it is known that it produces the exact opposite of the morbid symptom sought to be subdued, from which, agreeably to the 15 centuries old traditional rule of the antiquated medical school, contraria contraris, he can expect the speediest palliative relief. He gives large doses of opium for pains of all sorts, because this drug soon benumbs the sensibility, and administers the same remedy for diarrheas, because it speedily puts a stop to the peristaltic motion of the intestinal canal and makes it insensible, and also for sleeplessness, because opium rapidly produces a stupefied, comatose sleep. He gives purgatives when the patient has suffered long from constipation and costiveness. He causes the burnt hand to be plunged into cold water, which, from its low degree of temperature, seems instantaneously to remove the burning pain. As if by magic, he puts the patient who complains of chilliness and deficiency of vital heat into warm baths, which warm him immediately. He makes him who is suffering from prolonged debility drink wine, whereby he is instantly enlivened and refreshed, and in like manner he employs other opposite, antipathic, remedial means, but he has very few besides those just mentioned, as it is only of very few substances that some peculiar, primary, action is known to the ordinary medical school. सूत्र 57 दवा की तर्कशैली। विरोध भाव रखने वाली चिकित्सा पद्धति को लागू करने के लिए एक सामान्य चिकित्सक पहले तो उस लक्षण को खोजता है जो रोगी को सबसे ज्यादा पीड़ा दे रहा है। रोग के दूसरे लक्षणों को वो अनदेखा कर देता है। इसके बाद चिकित्सक उस दवा का प्रयोग करता है जो मुख्य पीड़ाकारी लक्षण के विरुद्ध लक्षण रोगी में पैदा करती है। इस व्यवस्था को 15वीं सदी से पुरानी परंपरागत चिकित्सा पद्धति वालों ने अपनाया है। इससे चिकित्सक यह अपेक्षा करता है कि रोगी को तुरंत राहत मिलेगी। सभी प्रकार के दर्द के लिए वो बड़ी मात्रा में रोगी को अफीम देता है, क्योंकि यह दवा रोगी की संवेदनशीलता को सुन्न कर देती है। वह दस्त के लिए भी अफीम ही देता है, क्योंकि इससे आंतों की गति तुरंत रुक जाती है और आंतें संवेदनाहीन हो जाती हैं। अनिद्रा के लिए भी वह अफीम ही देता है, क्योंकि अफीम से भारी बेहोशी जैसी निद्रा आती है। जब रोगी कब्ज की पुरानी शिकायत लेकर आता है तो वो उसे जुलाब देता है। जब रोगी का हाथ जल जाता है तो वो उसे ठंडे पानी में डुबाता है। ठंडे पानी से हाथ की जलन में ऐसे राहत मिलती है मनो कोई जादू हो गया। यदि रोगी ठंड महसूस करता है और उसमें यदि उसके प्राणों में गर्मी का अभाव है तो वह उसे गर्म पानी से नहलाता है, जिससे रोगी तुरंत ही गर्मी महसूस करता है। यदि कोई व्यक्ति शक्तिहीनता की शिकायत लेकर आता है तो वह उसे शराब पिलाता है, जिससे रोगी में तुरंत ताजगी और चैतन्य आता है। इस प्रकार यह चिकित्सक अन्य विरोध भाव रखने वाली पद्धतियों को दूसरे मामलों में इस्तेमाल करता है। लेकिन परंपरागत चिकित्सा पद्धति के अनुयायियों के पास काफी सीमित दवाइयां हैं जिनकी प्रधान क्रिया वो जानते हैं। Aphorism 5858.
If, in estimating the value of this mode of employing medicines, we should even pass over the circumstance that it is an extremely faulty symptomatic treatment, we Note 27, wherein the practitioner devotes his attention in a merely one-sided manner to a single symptom, consequently to only a small part of the whole, whereby relief for the totality of the disease, which is what the patient desires, cannot evidently be expected. We must, on the other hand, demand of experience if, in one single case where such antipathic employment of medicine was made use of in a chronic or persisting affection, after the transient amelioration there did not ensue an increased aggravation of the symptom which was subdued at first in a palliative manner. An aggravation, indeed, of the whole disease. And every attentive observer will agree that, after such short antipathic amelioration, aggravation follows in every case without exception, although the ordinary physician is in the habit of giving his patient another explanation of this subsequent aggravation, and ascribes it to malignancy of the original disease, now for the first time showing itself, or to the occurrence of quite a new disease one little as physicians have hitherto been in the habit of observing accurately, the aggravation that so certainly follows such palliative treatment could not altogether escape their notice. A striking example of this is to be found in J. H. Schulze's Dis. Qua corporis humani momentaneum alterationum specimina quoedam expendentur, Hale, 1741, 28. Willis bears testimony to something similar. Farm. Rat. 7. Cap. IP.298, opiata dolores atrocessimos plerumque sedent atque indolentium precurrent, camque aliquendio et pro stato quodum tempore continuant, quo spatio elapso dolores mox recrusciscent et brevi ad sol item ferocium urgentia. And also at page 295, exactus opi viribus illico redent domina, enaisi atrocitatum sum remittunt, nisi dum ab iodum pharmaco rusus incantiuntur. In like manner J. Hunter, on the venereal disease p.13, says that wine and cordials given to the weak increase the action without giving real strength, and the powers of the body are afterwards sunk proportionally as they have been raised, by which nothing can be gained, but a great deal may be lost. सूत्र 58 दवा की तर्कशैली. यदि हम विरोध भाव रखने वाली पद्धति का मूल्यांकन करते हैं तो हमें इसकी एक बहुत बड़ी खामी नजर आएगी. इसमें चिकित्सक केवल एक ही लक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है. ये तो सामने जो मामला है उसके केवल एक ही अंग को देखना हुआ. चिकित्सक समग्र लक्षणों को तो देख ही नहीं रहा है. वो तो समग्रता के एक छोटे से हिस्से को देख रहा है. लेकिन रोगी को तो उसके समग्र लक्षणों में राहत चाहिए जो स्वभावतः चिकित्सक तो दे नहीं पाएगा. मैं तो कहता हूं कि अब तक के सभी जीर्ण रोगों के मामले छान मारो और मुझे मात्र एक मामला ऐसा दिखा दो जिसमें जीर्ण रोग में विरोधाभाव पद्धति का अवलंब हुआ और थोड़ी देर के आराम के बाद रोगी को वह लक्षण जिसमें मामूली आराम हुआ था और बदतर न हो गया. केवल वही लक्षण बदतर नहीं हुआ बल्कि पूरा के पूरा रोग ही बदतर हो गया. जिन चिकित्सकों को ठीक से देखना आता है उन्होंने देखा है कि विरोधी चिकित्सा के कारण पहले कुछ तो आराम हुआ लेकिन बाद में बिना किसी अपवाद के हर मामले में रोगी बदतर हो गया. लेकिन जो सामान्य चिकित्सक होते हैं उन्हें रोगी को कुछ सफाई देने की आदत होती है. वो कहते हैं कि रोगी का कुछ आराम के बाद में बदतर होना असली रोग के बढ़ने की वजह से हुआ है, जो कि पहली बार अब प्रकट हुआ है. या इसकी वजह एक नए रोग का आगमन भी हो सकता है. जो देखने में कुशल हैं उन्होंने देखा है कि विरुद्ध पद्धति में पहले तो कुछ राहत मिलती है लेकिन बाद में मामला बदतर होता ही है. हंटर ने इस बात को देखा कि जब कमजोर रोगी को शराब पिलाई गई तो उसके कारनामे तो कुछ बढ़े लेकिन उसकी असली शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई और बाद में तो उसके शरीर की शक्ति और भी कम हो गई. तो इस लेन देन से तो रोगी को नुकसान ही हुआ. Aphorism 59. Important symptoms of persistent diseases have never yet been treated with such palliative, antagonistic remedies, without the opposite state, a relapse indeed, a palpable aggravation of the malady occurring a few hours afterwards. For a persistent tendency to sleepiness during the day the physician prescribed coffee, whose primary action is to enliven, and when it had exhausted its action the day somnolence increased. For frequent waking at night he gave in the evening, without heeding the other symptoms of the disease, opium, which by virtue of its primary action produced the same night stupefied, dull sleep, but the subsequent nights were still more sleepless than before. To chronic diarrheas he opposed, without regarding the other morbid signs,
The same opium, whose primary action is to constipate the bowels, and after a transient stoppage of the diarrhea it subsequently became all the worse, violent and frequently recurring pains of all kinds he could suppress with opium for but a short time, they then always returned in greater, often intolerable severity, or some much worse affection came in their stead. For nocturnal cough of long standing the ordinary physician knew no better than to administer opium, whose primary action is to suppress every irritation. The cough would then perhaps cease the first night, but during the subsequent nights it would be still more severe, and if it were again and again suppressed by this palliative in increased doses, fever and nocturnal perspiration were added to the disease. Weakness of the bladder, with consequent retention of urine, was sought to be conquered by the antipathic work of cantharides to stimulate the urinary passages whereby evacuation of the urine was certainly at first affected, but thereafter the bladder becomes less capable of stimulation and less able to contract, and paralysis of the bladder is imminent, with large doses of purgative drugs and laxative salts, which excite the bowels to frequent evacuation. It was sought to remove a chronic tendency to constipation, but in the secondary action the bowels became still more confined. The ordinary physician seeks to remove chronic debility by the administration of wine, which, however, stimulates only in its primary action, and hence the forces sink all the lower in the secondary its primary action, and hence the forces sink all the lower in the secondary action. By bitter substances and heating condiments he tries to strengthen and warm the chronically weak and cold stomach, but in the secondary action of these palliatives, which are stimulating in their primary action only, the stomach becomes yet more inactive. Long-standing deficiency of vital heat and chilly disposition ought surely to yield to prescriptions of warm baths. But still more weak, cold, and chilly do the patients subsequently become. Severely burnt parts feel instantaneous alleviation from the application of cold water, but the burning pain afterwards increases to an incredible degree, and the inflammation spreads and rises to a still greater height. One by means of the stimulatory remedies that provoke a secretion of mucus, coryza with stoppage of the nose of long standing is sought to be removed, but it escapes observation that the disease is aggravated all the more by these antagonistic remedies in their secondary action. And the nose becomes still more stopped by electricity and galvanism, within their primary action greatly stimulate muscular action. Chronically weak and almost paralytic limbs were soon excited to more active movements, but the consequence, the secondary action, was complete deadening of all muscular irritability and complete paralysis. By venesections it was attempted to remove chronic determination of blood to the head, but they were always followed by greater congestion. Ordinary medical practitioners know nothing better with which to treat the paralytic torpor of the corporeal and mental organs, conjoined with unconsciousness, which prevails in many kinds of typhus, than with large doses of valerian, because this is one of the most powerful medicinal agents for causing animation and increasing the motor faculty. In their ignorance, however, they knew not that this action is only a primary action, and that the organism, after that is past, most certainly falls back, in the secondary, antagonistic action, into still greater stupor and immobility, that is to say, into paralysis of the mental and corporeal organs, and death. They did not see that the very diseases they supplied most plentifully with valerian, which is in such cases an oppositely acting, antipathic remedy, most infallibly terminated fatally. The old school physician rejoices too that he is able to reduce for several hours the velocity of the small rapid pulse in cachectic patients with the very first dose of an combined purple foxglove, which in its primary action makes the pulse slower. Its rapidity, however, soon returns. Repeated and now increased doses effect an ever smaller diminution of its rapidity, and at length none at all. Indeed, in the secondary action the pulse becomes uncountable, sleep, appetite and strength depart, and a speedy death is invariably the result. Or else insanity ensues. How often, in one word, the disease is aggravated, or something even worse is affected by the secondary action of such antagonistic, antipathic remedies, the old school with its false theories does not perceive, but experience teaches it in a terrible manner. 1 Vide Introduction. 2 Vide Hufeland, in his pamphlet Die Homöopathie, p.20. सूत्र 59 दवा की तर्कशैली. जब कभी जीर्ण रोगों का इलाज विरोध पद्धति से होता है तो कुछ घंटों के बाद ही रोगी की हालत बदतर हो जाती है. एक रोगी को दिन में नींद आती थी. कॉफी की मुख्य क्रिया चैतन्य प्रदान करने की है, सो चिकित्सक ने रोगी को कॉफी पिलाई. कॉफी का असर दिन भर रहा और बाद में खत्म हो गया.
इसके बाद रोगी की निद्रालुता और बढ़ गई। अब जब रोगी चिकित्सक को कहने लगा कि रात भर उसकी नींद बहुत बार टूटती है तो चिकित्सक ने उसे अफीम खिलाई। अफीम से रोगी को माने वो बेहोश हो गया हो ऐसी नींद आ गई। लेकिन आने वाली रात को तो रोगी सो ही नहीं पाया। जीर्ण दस्त में चिकित्सक रोग के दूसरे लक्षणों को अनदेखा करते हुए अफीम देता है। अफीम की मुख्य क्रिया तो कब्ज करना है, लेकिन दस्त थोड़ा रुकने के बाद तो बदतर हो जाते हैं। दर्द तो अफीम से रुक जाएगा लेकिन बाद में बहुत बढ़ जाएगा या और कोई गड़बड़ी होगी। सामान्य चिकित्सक रात्रिकालीन खांसी के लिए अफीम का प्रयोग करेगा। हर प्रकार की सरसराहट अफीम शांत कर देती है। अफीम की मुख्य क्रिया तो सरसराहट को शांत करना ही है। खांसी एक दिन तो रुक जाएगी लेकिन बाद में उग्र रूप धारण करेगी। अब चिकित्सक बार बार अफीम देकर और उसकी खुराक बढ़ाकर खांसी को दबाना चाहेगा। ऐसा करने से रोगी को बुखार आ जाएगा और उसे रात को पसीना भी छूटने लगेगा। जब रोगी ने कहा कि उसे पेशाब खुलकर नहीं आ रहा है और उसका मूत्राशय कमजोर हो गया है, तो चिकित्सक ने रोगी का मूत्राशय उत्तेजित करने के लिए उसे कैंथरिस दे दिया। ऐसा करने से पहले तो पेशाब खुलकर आने लगी लेकिन बाद में उसके उत्तेजित होने की और संकुचित होने की क्षमता क्रमशः घटने लगी। अब तो मानो मूत्राशय का पक्षाघात होना तय हो गया। रोगी को पुरानी कब्ज है। चिकित्सक ने उसे बड़ी मात्रा में जुलाब देना शुरू किया, जिससे कि आंत उत्तेजित हो जाए और रोगी का पेट साफ हो जाए। लेकिन इस मुख्य क्रिया की जो प्रतिक्रिया हुई उससे आंतों की क्रिया और मंद हो गई। सामान्य चिकित्सक रोगी की पुरानी कमजोरी दूर करने के लिए उसे शराब पिलाते हैं। शराब की मुख्य क्रिया के कारण रोगी उत्तेजित हो जाता है, लेकिन जब इस क्रिया की प्रतिक्रिया आती है तो रोगी की कमजोरी और बढ़ जाती है। कड़वी और गर्म दवा काढ़ों के रूप में देकर चिकित्सक एक रोगी की पाचन शक्ति को प्रज्वलित करना चाहता है, लेकिन जब इन काढ़ों की प्रतिक्रिया आती है तो पाचन क्रिया और ठंडी और कमजोर हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को ठंड लगने की पुरानी शिकायत है और उसमें जीवनी ऊष्मा की कमी है तो उसे गर्म पानी में नहाने की सलाह जरूर कुछ राहत पहुंचाएंगी, लेकिन बाद में वो व्यक्ति और कमजोर, ठंडा और जीवनी ऊष्मा से विहीन हो जाएगा। यदि व्यक्ति का अंग जलता है तो ठंडे पानी के प्रयोग से उसे तुरंत लाभ मिल सकता है, लेकिन बाद में उसकी जलन एक भयंकर हद तक बढ़ जाएगी और जले हुए भाग पर सूजन भी आ जाएगी जो बढ़ती रहेगी। जमी नाक को खोलने के लिए चिकित्सक रोगी को छींक लाने वाली दवा देते हैं। इससे नाक तो खुलती हुई लगती है लेकिन बाद में बुरी तरह जम जाती है। बिजली के हल्के झटके स्नायु को उत्तेजित कर सकते हैं, लेकिन इस उत्तेजना की प्रतिक्रिया में व्यक्ति को पक्षाघात जैसी कमजोरी हो सकती है। यदि रोगी के दिमाग में भारी मात्रा में रक्त प्रवाह होता है तो चिकित्सक अतिरिक्त खून को नस को काटकर बहा देते हैं, लेकिन इससे सर में खून का असाधारण जमाव हो जाता है। साधारण चिकित्सकों को नहीं समझता है कि टाइफाइड के कारण जो मानसिक पक्षाघात जैसी सुस्ती आती है उसे कैसे ठीक करे। इसमें तो रोगी बेहोशी की हालत में चला जाता है। साधारण चिकित्सक ऐसे रोगी को वैलेरियन देते हैं। वैलेरियन हर्षोल्लास पैदा करता है। वैलेरियन मस्तिष्क से अंगों का संचार बढ़ाता है, लेकिन वैलेरियन की यह केवल प्राथमिक क्रिया है। इसकी जब प्रतिक्रिया होती है तो रोगी का मानसिक पक्षाघात बढ़कर उसे मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए वैलेरियन ने अपनी प्रतिक्रिया से ऐसे अनेक रोगियों को मारा है जिन्हें ये दवा उसकी प्राथमिक क्रिया को ध्यान में रखकर दी गई। परंपरागत चिकित्सा को मानने वाले चिकित्सक इस बात से बेहद राजी होते हैं कि उन्होंने एक दुर्बल रोगी की तेजी से चलने वाली कमजोर नब्ज को डिजिटालिस की एक ही खुराक देकर धीमा कर दिया। ये तो डिजिटालिस की प्राथमिक क्रिया है। जब उसकी प्रतिक्रिया होगी तो नब्ज की गिनती करना ही मुश्किल हो जाएगा। नींद, भूख और शक्ति तीनों अलविदा कह देंगे। या तो तेजी से मौत आ जाएगी या व्यक्ति पागल हो जाएगा। 100 बात की एक बात, चिकित्सक दवा की प्राथमिक क्रिया को देखकर अपने सिद्धांत बनाता है और दवा की प्रतिक्रिया रोग को बदतर कर देती है या उससे भी संगीन परिणाम लाती है। परंपरागत चिकित्सा के अनुयायी तो इसे जान नहीं पाते, लेकिन अनुभव विकराल रूप में सब बातें सिखाता है। Aphorism 60. If these ill effects are produced, as may very naturally be expected from the antipathic employment of medicines, the ordinary physician imagines he can get over the difficulty by giving, at each renewed aggravation, a stronger dose of the remedy, whereby an equally transient suppression one is effected, and is there then as a still greater necessity for giving ever increasing quantities of the palliative, there ensues either another more serious disease or frequently even danger to life and death itself, but never a cure of a disease of considerable or of long standing.
1. All usual palliatives given for the suffering of the sick have, as is seen here, as after effects an increase of the same suffering, and the older physicians had to repeat them in ever stronger doses in order to achieve a similar modification, which, however, was never permanent and never sufficient to prevent an increased recurrence of the ailment. But Brousseau, who 25 years before contended against the senseless mixing of different drugs in prescription and thereby ending its reign in France, for which mankind is grateful to him, introduced his so-called physiological system, without taking note of the homeopathic method then already established, a method of treatment, while effectively lessening and permanently preventing the return of all the sufferings, was applicable to all diseases of mankind, a thing that the palliatives then in use were not capable of effecting. Being able to heal disease with mild innocent remedies and thus establish health, Brousseau found the easier way to quiet the sufferings of patients more and more at the cost of their life and at last to extinguish life wholly, a method of treatment that, alas, seemed sufficient to his contemporaries. In the degree that the patient retains his strength will his ailments be apparent, and the more intensely will he feel his pains. He moans and groans and cries out and calls for help more and more vociferously, so that the physician cannot come any too soon to give relief. Brousseau needed only to depress the vital force, to lessen it more and more, and behold, the more frequently the patient was bled, the more leeches and cupping glasses sucked out the vital fluid, for the innocent irreplaceable blood was according to him responsible for almost all ailments. In the same proportion the patient lost strength to feel pain or to express his aggravated condition by violent complaint and gestures. The patient appears more quiet in proportion as he grows weaker. The bystanders rejoice in his apparent improvement, ready to return to the same measures on the renewal of his sufferings, be they spasms, suffocation, fears or pain, for they had so beautifully quieted him before and gave promise of further ease. In disease of long duration, and when the patient retained some strength, he was deprived of food, put on a hunger diet, in order to depress life so much more successfully and inhibit the restless states. The debilitated patient feels unable to protest against further similar measures of blood-letting leeches, vesication, warm baths and so forth, to refuse their employment. That death must follow such frequently repeated reduction and exhaustion of the vital energy is not noticed by the patient, already robbed of all consciousness, and the relatives, blinded by the improvements even of the last sufferings of the patient by means of bloodletting and warm baths, cannot understand and is surprised when the patient quietly slips away. But God knows the patient on his bed of sickness was not treated with violence, for the prick of a small lancet is not really painful, and the gum arabic solution, or the gom, almost the only medicine that Brousseau used, was mild in taste and without apparent action. The bite of the leech is insignificant, and the bloodletting by the physician done quietly, while the lukewarm baths could only soothe. Hence the disease from the very start must have been fatal, so that the patient, notwithstanding all efforts of the physician, had to leave the earth. In this way the relatives, and especially the heirs of the dear departed, consoled themselves. The physicians in Europe and elsewhere accepted this convenient treatment of all disease according to a single rule, since it saved them from all further thinking, the most laborious of all work under the sun. They only had to take care to assuage the pangs of conscience and console themselves that they were not the originators of this system and this method of treatment, that all the other thousands of Brousseauists did the same, and that possibly everything would cease with death anyway, as was taught by their master. In this way many thousand physicians were miserably misled to shed, with cold heart, the warm blood of their patients that were capable of cure, and thereby rob millions of men gradually of their life, according to Brousseau's method, more than fell on Napoleon's battlefields. Was it perhaps necessary by the disposition of God for that system of Brousseau which destroyed medically the life of curable patients to proceed homeopathy in order to open the eyes of the world to the only true science and art of medicine, homeopathy, in which curable patients find health and new life when this most difficult of all arts is practiced by an indefatigable discriminating physician in a pure and conscientious manner. सूत्र 60 दवा की तर्कशैली। विरोधी पद्धति को जब प्रयुक्त किया जाएगा तो स्वभावतः उसके दुष्परिणाम तो होंगे ही। सामान्य चिकित्सक को ऐसा लगता है कि जब भी मुश्किल बढ़ेगी तो वह बढ़ी हुई तकलीफ के लिए और शक्तिशाली खुराक दे देगा। इससे क्या होगा, बस कुछ देर के लिए तकलीफ दब जाएगी। अब जब तकलीफ लौट कर आएगी तो मामूली लाभ देने वाली दवा की मात्रा और बढ़ानी पड़ेगी।
इस प्रकार यदि दवा की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो दूसरा गंभीर रोग उत्पन्न हो जाएगा या अधिकतर जैसा होता है जीवन को ही खतरा पैदा हो जाएगा। मौत भी हो सकती है। लेकिन इससे पुराने और गहरे रोग का इलाज नहीं हो सकता। जब भी रोगी को कोई दवा मामूली राहत पहुंचाती है और ऐसी दवा को जब बार बार दोहराना पड़ता है तो इसका यही परिणाम होता है कि रोगी की वही पीड़ा बढ़ती जाती है। परंपरागत चिकित्सक उतनी ही राहत पहुंचाने के लिए दवा की खुराक बढ़ाने को बाध्य हो जाता है, लेकिन ये राहत स्थायी रूप से नहीं टिकती। इस प्रकार का दवा देना रोग को वापस आने से रोक नहीं सकता। फ्रांस के एक चिकित्सक ब्रोसो को यह बात समझ में आई। उसने दवा को बिना किसी समझ के मिश्रण के रूप में देने का विरोध किया। फ्रांस में इस पद्धति को रोकने में वह सफल हुआ। उसने उपचार की अपनी एक स्वतंत्र व्यवस्था विकसित की जो समलक्षण चिकित्सा पद्धति से भिन्न थी। उसने पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाई और उनकी पीड़ा को बार बार आने से भी रोका। लोगों को सौम्य निरापद दवा देकर स्वस्थ किया जा सकता है, लेकिन इस फ्रेंच चिकित्सक ने लोगों को पीड़ा मुक्त करने का ऐसा तरीका निकाला कि उन्हें अपने प्राणों से ही हाथ धोना पड़ा। जब लोग अपने प्राणों से विहीन हो गए तो बाकी चिकित्सकों ने कहा कि लोगों की पीड़ा हरने का यही तो आखिरी रास्ता है। यदि रोगी में पर्याप्त शक्ति है तो उसे अपने रोगों की अनुभूति होगी और उसे पीड़ा का भी अनुभव होगा। रोगी चिल्लाएगा, चीखेगा और रोएगा। इतने जोर से चिल्लाएगा कि चिकित्सक तो आएगा ही नहीं।